Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. In this video, I'm going to give you an insight of immobilized enzymes. Let's look at the contents that are included in this video. We will discuss the definition of enzymes, what are enzymes, and then we'll learn the definition of immobilized enzymes. We will discuss the background and technological properties of immobilized enzymes, major products obtained using immobilized enzymes, and history of the immobilization, as well as advantages of immobilized enzymes. Then we'll learn the components of immobilized enzymes and choice of support, classification of support, and immobilization criteria. Beginning with the first question about enzymes. What are enzymes? Enzymes are biological catalysts that promote the transformation of chemical species or living systems. Enzymes are biological molecules, typically proteins, that significantly speed up the rate of virtually all of the chemical reactions that take place within cells. They are vital for life and serve a wide range of important functions in the body, such as aiding in digestion and metabolism. These molecules, consisting of thousands of atoms in precise arrangements, can catalyze the multitude of different chemical reactions occurring in biological cells. Enzymes have the ability to catalyze reactions under very mild conditions with a very high degree of substrate specificity, thus decreasing the formation of byproducts. Among the reactions catalyzed are a number of very complex chemical transformations between biological molecules which are not accessible to ordinary methods of organic chemistry. This makes them very interesting for biotechnological use. At the beginning of the 20th century, enzymes were shown to be responsible for fermentation processes, and their structure and chemical composition started to come under scrutiny. The resulting knowledge led to widespread technological use of biological catalysts in a variety of other fields such as the textile, pharmaceutical, and chemical industries. However, most enzymes are relatively unstable, their cost of isolation are still high, and it is technically very difficult to recover the active enzyme when used in solutions from the reaction mixture after use. हम ये बात करते हैं कि एंजाइम्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं. एंजाइम्स बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं जो प्रमोट करते हैं केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन को या केमिकल रिएक्शंस को लिविंग सिस्टम्स के अंदर. एंजाइम्स को हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं जो कि टिपिकली प्रोटीन्स होते हैं. ये सिग्निफिकेंटली स्पीड अप करते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस को जो कि सेल के अंदर हो रहे हैं. एंजाइम्स वाइटल हैं लाइफ के लिए और एक वाइड रेंज ऑफ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं बॉडी में, जिनमें से सिंपलेस्ट डाइजेशन है या मेटाबॉलिज्म है. एंजाइम मॉलिक्यूल्स थाउजेंड्स ऑफ एटम्स से कॉन्स्टिट्यूट हुए होते हैं और इनकी प्रिसाइज अरेंजमेंट कैटलाइज करती है मल्टीट्यूड ऑफ डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को जो कि बायोलॉजिकल सेल्स के अंदर अकर हो रहे हैं. एंजाइम्स के पास ये एबिलिटी है कि वो रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं अंडर वेरी माइल्ड कंडीशंस और विद अ वेरी हाई डिग्री ऑफ सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी, जिसकी वजह से बाय प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन को डिक्रीज करते हैं. जो रिएक्शंस एंजाइम्स के साथ कैटलाइज होते हैं वो कॉम्प्लेक्स केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं बिटवीन बायोलॉजिकल मैक्रोमॉलिक्यूल्स जो कि नॉर्मली एक्सेसिबल नहीं होते ऑर्डिनरी मेथड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. यही वजह है कि बायोटेक्नोलॉजिकल यूज में एंजाइम्स का एक मेजर रोल है और एक इंटरेस्टिंग रोल है. 20th सेंचुरी की बिगनिंग में एंजाइम्स सिर्फ फर्मेंटेशन प्रोसेसेस के लिए यूज होते थे और इनका स्ट्रक्चर और केमिकल कॉम्पोजिशन नोन नहीं था.
जब उनका केमिकल कॉम्पोजिशन और स्ट्रक्चर नोन हुआ तो उस नॉलेज ने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और एप्लीकेशंस एंजाइम्स की बढ़ा दी. And nowadays it is used in textile, pharmaceutical and chemical industries. So what are immobilized enzymes? Enzymes can catalyze reactions in different states as we have just discussed. They can catalyze reactions in as individual molecules. They can catalyze reactions in solution, in aggregates with other entities, and as attached to the surfaces. The attached or immobilized state has been of particular interest to those wishing to exploit enzymes for technical purposes. The term immobilized enzyme refers to enzymes physically confined or localized in a certain defined region of the space with retention to their catalytic activities and which can be used repeatedly and continuously. Or you can also define them as immobilized enzymes are enzymes which are attached in or onto the surfaces of an insoluble support. तो जैसे कि हमने पढ़ा कि एंजाइम कैटलाइज करते हैं रिएक्शंस को डिफरेंट स्टेट्स के अंदर. ये रिएक्शन को कैटलाइज कर सकते हैं एज इंडिविजुअल मॉलिक्यूल या फिर सॉल्यूशन में प्रेजेंट होने के बाद या फिर एग्रीगेट की फॉर्म में जो डिफरेंट एंटिटीज़ के साथ एग्रीगेशन करते हैं. या इसके अलावा अगर एंजाइम किसी भी सरफेस के ऊपर अटैच है तो वो रिएक्शन को कैटलाइज कर सकता है. अटैच्ड या इमोबिलाइज्ड स्टेट पर्टिकुलर इंटरेस्ट रखती है उस वक्त जब एंजाइम की टेक्निकल प्रॉपर्टीज़ को यूटिलाइज करना होता है. इमोबिलाइज्ड एंजाइम की टर्म को अगर हम डिफाइन करें, एंजाइम्स जब फिजिकली कन्फाइन होते हैं ये लोकलाइज होते हैं एक सर्टेन डिफाइंड रीजन ऑफ स्पेस में और अपनी कैटलाइटिक एक्टिविटीज़ को रिटेन करते हैं. And these catalytic activities can be used repeatedly and continuously. या फिर हम immobilized enzyme को इस तरह से define करते हैं कि immobilized enzymes are actually enzymes which are attached in or onto the surfaces of an insoluble support. There are certain technological properties of immobilized systems, or you can say there are certain advantages and disadvantages of immobilized enzymes. So the advantages includes catalyst reuse. You can reuse the immobilized enzyme. They are easier in reactor operations. They are easier in product separation, and there is a wider choice of reactors available for the application of immobilized enzymes. But there are certain disadvantages which are associated with immobilized enzymes, and these include loss or reduction in activity, diffusional limitation, and additional cost. The first industrial use of immobilized enzyme was reported in 1967 by Chibata and co-workers who developed the immobilization of Aspergillus oryzae aminocyclase for the resolution of synthetic racemic DL amino acid. Other major applications of immobilized enzymes are the industrial production of sugars, amino acids, and pharmaceuticals. In some industrial processes, whole microbial cells containing the desired enzyme are immobilized and used as a catalyst. There are certain examples of enzymes and the products that are obtained from the use of immobilized enzyme. For example, glucose isomerase is used to produce high fructose corn syrup. Amino acid acyclase is used for the amino acid production. Penicillin acyclase is used for semi-synthetic penicillins, and nitrile hydratase is used to produce acrylamide. Beta-galactosidase can be used to produce hydrolyzed lactose, or commonly known as whey.
Aside from the application in industrial processes, the immobilization technique are the basis for making a number of biotechnological products with applications in diagnostics, bioaffinity chromatography, and biosensors. Therapeutic applications are also foreseen, such as the use of enzymes in extracorporeal shunts. In the past 3 or 4 decades, immobilization technology has developed rapidly and has increasingly become a matter of rational design, but there is still the need for further development. Extension for the use of immobilized enzymes to other practical purposes will require new methodologies and a better understanding of current techniques. It is possible to visualize 3 steps in the development of immobilized biocatalysts. First one is the beginning of the 19th century. Immobilized microorganisms were being employed industrially and on empirical basis. This was the case with both the microbial production of vinegar by letting alcohol containing solution trickle over wood shavings overgrown with bacteria, and the development of the trickling filter for percolating processes for wastewater clarification. The modern history of enzyme immobilization goes back to the late 1940s. The basis of the present technologies was developed in the 1960s. In the second step, only immobilized single enzymes were used. By the 1970s. More complex systems, including 2 enzyme reactions with cofactor regeneration and living cells, were developed. As an example of the latter, we can mention the production of L-amino acid from alpha keto acids by stereoselective reductive amination and L-amino acid dehydrogenase. The processes involve the consumption of nicotinamide adenine dinucleotide NADH and regeneration of the coenzyme by coupling the amination with the enzymatic oxidation of formic acid to carbon dioxide with concomitant reduction of NAD to NADH in the reaction catalyzed by second enzyme formate dehydrogenase. ये पॉसिबल है कि हम डेवलपमेंट या इमोबिलाइज्ड बायोकैटलिस्ट की डेवलपमेंट को 3 स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर दें. पहला स्टेप पहले स्टेप की बिगनिंग होती है 19th सेंचुरी के शुरू में या 19th सेंचुरी के वक्त, जब इमोबिलाइज्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंडस्ट्रियली एम्प्लॉय किए जाते थे ऑन एम्पेरिकल बेसिस, और इनका यूज़ 2 तरीके से होता था. माइक्रोबियल प्रोडक्शन, विनेगर की माइक्रोबियल प्रोडक्शन के लिए, और इसके अलावा वेस्ट वाटर क्लैरिफिकेशन के लिए. मॉडर्न हिस्ट्री एंजाइम इमोबिलाइजेशन की आती है लेट 1940s में या अर्ली 1960s में. इस सेकेंड स्टेप के अंदर शुरू में सिर्फ सिंगल एंजाइम्स यूज़ होते थे, लेकिन टिल 1970s एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम अराइज हुआ जिसमें 2 इमोबिलाइज्ड एंजाइम्स या 2 एंजाइम्स रिएक्शंस में यूज़ होते थे, यानी एक इमोबिलाइज्ड एंजाइम और एक कोफैक्टर फॉर रीजनरेशन एंड लिविंग सेल्स. एज एन एग्जांपल अगर हम इसको मेंशन करें तो एल अमाइनो एसिड्स की प्रोडक्शन है, जिसके अंदर एल अमाइनो एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम कीटो एसिड्स by stereoselective reductive amination with L-amino acid dehydrogenase. और ये प्रोसेस इन्वॉल्व करता है कंजम्पशन ऑफ निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड या NADH की, जिसमें एडिनिन NAD रिड्यूस होता है टू NADH, और ये रिएक्शन फर्दर कैटलाइज होता है एक सेकेंड एंजाइम से फॉर्मेट डिहाइड्रोजनेज जिसे कहते हैं. Immobilized enzymes have several advantages over the soluble enzymes. First one is convenience. Minuscule amounts of protein dissolved in the reaction is needed, so workup can be much easier.
Upon completion, reaction mixtures typically contain only solvent and the reaction products. The second advantage is its economical benefit because they can be easily removed from the reaction mixture and they can be reused. And the third advantage of immobilized enzyme is their stability. Immobilized enzymes typically have greater thermal and operational stability than the soluble form of the enzymes. Immobilized enzyme के several advantages हैं over soluble enzyme. पहला एडवांटेज कन्वीनियंस का है क्योंकि मिनिस्कल अमाउंट या बहुत कम अमाउंट एंजाइम्स की डिज़ोल्व होती हैं रिएक्शन में और रिएक्शन कंपोनेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए मिनिस्कल अमाउंट ही हेल्पफुल होती है और कंप्लीशन के बाद रिएक्शन मिक्सचर के अंदर सिर्फ सॉल्वेंट और रिएक्शन प्रोडक्ट्स होती हैं. सेकेंड एडवांटेज इकोनॉमिकल बेनिफिट है क्योंकि इमोबिलाइज्ड एंजाइम इजीली रिमूव हो जाते हैं फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर और इनको रीयूज़ किया जा सकता है. थर्ड एडवांटेज इज स्टेबिलिटी. इमोबिलाइज्ड एंजाइम टिपिकली ग्रेटर थर्मल और ऑपरेशनल स्टेबिलिटी रखते हैं व्हेन दे आर कंपेयर्ड विद द सॉल्युबल फॉर्म ऑफ द एंजाइम्स. The major components of an immobilized enzyme system are the enzyme, the matrix, and the mode. The major components of an immobilized enzyme system include the enzyme, the matrix, and the mode of attachment of the enzyme to the matrix. The terms solid phase support, carrier, and matrix are used synonymously. Our next topic is choice of support. The characteristics of the matrix are of paramount importance in determining the ideal performance of the immobilized enzyme system. Ideal support properties include physical resistance to compression, hydrophilicity, inertness toward enzyme, ease of derivatization, biocompatibility, resistance to microbial attack, and availability at low cost. The physical characteristics of the matrices such as mean particle diameter, swelling behavior, mechanical strength, and compression behavior will be of major importance for the performance of immobilized enzymes and will determine the type of reactor used under technical conditions that may be stir tank, fluidized, or fixed beds. In particular, 4 parameters and particle size determine the total surface area and thus critically affect the capacity for binding of enzymes. Non-porous supports show few diffusional limitations but have a low loading capacity. Therefore, porous supports are generally preferred because the high surface area allows for a greater enzyme loading and the immobilized enzymes receive greater protection from the environment. Porous support should have a controlled pore distribution in order to optimize capacity and flow properties. In spite of the many advantages of inorganic carriers, for example, high stability against physical, chemical, and microbial degradation, most of the industrial applications are performed with organic matrices. The hydrophilic character is one of the most important factors determining the level of activity of an immobilized enzyme. मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक पैरामाउंट इम्पोर्टेंस रखती हैं इमोबिलाइज्ड एंजाइम सिस्टम की परफॉर्मेंस को डिटरमाइन करने के लिए. आइडियल सपोर्ट प्रॉपर्टीज इंक्लूड करती हैं फिजिकल रेजिस्टेंस टू कंप्रेशन, हाइड्रोफिलिसिटी, inertness towards enzyme, ease of derivatization, biocompatibility, resistance to microbial attack, and availability at low cost. फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिसेस की ये सपोर्ट की
जैसे कि मीन पार्टिकल डायमीटर, स्वेलिंग बिहेवियर या मैकेनिकल स्ट्रेंथ या फिर कंप्रेशन बिहेवियर मेजर इम्पॉर्टेंस रखते हैं इमोबिलाइज सिस्टम की परफॉर्मेंस को डिटरमाइन करने के लिए, और ये फर्दर डिटरमाइन करेगी टाइप ऑफ रिएक्टर जो कि अंडर टेक्निकल कंडीशंस यूज़ होंगे, जिनमें स्टिर टैंक रिएक्शंस हैं या फ्लूइडाइज्ड रिएक्टर्स हैं या फिक्स बेड्स हैं। पर्टिकुलरली पोर पैरामीटर्स और पार्टिकल साइज टोटल सरफेस एरिया डिटरमाइन करते हैं और इस वजह से क्रिटिकली इफेक्ट करते हैं एंजाइम्स की कैपेसिटी को फॉर बाइंडिंग। नॉन पोरस सपोर्ट की डिफ्यूजनल लिमिटेशंस बहुत कम होती हैं, जिसकी वजह से लो लोडिंग कैपेसिटी होती है नॉन पोरस सपोर्ट की। इसी वजह से पोरस सपोर्ट जनरली प्रेफर होती हैं बिकॉज सरफेस एरिया हाई होता है और ये हाई सरफेस एरिया ये अलाउ करता है कि हायर नंबर ऑफ एंजाइम्स लोड हो और इमोबिलाइज्ड एंजाइम्स ग्रेटर प्रोटेक्शन रिसीव करते हैं इन पोरस सपोर्ट फ्रॉम द एनवायरनमेंट। पोरस सपोर्ट के पास कंट्रोल पोर डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज द कैपेसिटी एंड फ्लो प्रॉपर्टीज। In spite of many advantages of inorganic carriers, जैसा कि हाई स्टेबिलिटी रखते हैं inorganic carriers अगेंस्ट फिजिकल, केमिकल या माइक्रोबियल डिग्रेडेशन के अगेंस्ट, बहुत सारी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में ऑर्गेनिक मैट्रिसेस या ऑर्गेनिक कैरियर्स प्रेफर किए जाते हैं। हाइड्रोफिलिसिटी या हाइड्रोफिलिक कैरेक्टर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑफ इमोबिलाइज्ड एंजाइम को डिटरमाइन करने के लिए। The support or matrices can be classified as inorganic or organic according to their chemical composition. Organic supports can be subdivided into natural polymers and synthetic polymers. Natural polymers include polysaccharides, which can be cellulose, dextrans, agarose, chitin, alginate, or proteins. Or proteins may include collagen or albumin, or they may include carbon. Synthetic polymers include polystyrene and other polymers like polyacrylate, polymethacrylates, polyacrylamide, polyamides, vinyl and allyl polymers. Inorganic support include natural minerals which may be bentonite or silica, or processed materials like glass, non-porous and controlled pore, metals, controlled pore or metal oxides. There are several requirements to achieve a successful immobilization. The biological component must retain substantial biological activity after attachment. It must have a long-term stability. The sensitivity of the enzyme must be preserved after attachment, and overloading can block or inactivate the active site of the immobilized biomaterial. Therefore, it must be avoided. Immobilization की different requirements हैं या एक डिफरेंट क्राइटेरिया है सक्सेसफुल इमोबिलाइजेशन के लिए। पहला ये कि बायोलॉजिकल कंपोनेंट सब्सटेंशियल बायोलॉजिकल एक्टिविटी रिटेन रखे आफ्टर अटैचमेंट। सेकंड, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी हो। एंड थर्ड, एंजाइम की सेंसिटिविटी प्रिजर्व रहे आफ्टर अटैचमेंट। एंड फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, ओवरलोडिंग मस्ट बी अवॉइडेड, क्योंकि ओवरलोडिंग ब्लॉक करती है या इनएक्टिवेट करती है एक्टिव साइट्स को इमोबिलाइज्ड बायोमटेरियल की। सो देयरफॉर इट मस्ट बी अवॉइडेड। That is all for this video. In the next video, you will be learning the methods of immobilization and applications of immobilized enzymes. Thank you for watching this video. Take care of yourself. Allah.